आज मैं हूँ ओहाका टाउन के पास एक छोटे से म्यूनिसिपैलिटी में और यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेस्कैल बनती कैसे है। वो बहुत इंडस्ट्रियल स्केल पे जो टकीला मैंने देखी बनते हुए, ये काफी अर्दन एंड एकदम स्मॉल स्केल पर। देखो 3 तरीके के मेस्कैल के मेथड हैं बनाने के। एक जो बिल्कुल रूटेड है हिस्ट्री में, बिल्कुल वैसे ही बनता है, दैट इज एंसेस्ट्रल, विच इज एंसेस्ट्रल बेसिकली। और ये है आर्टिसनल, विच इज लाइक दे मेकिंग इट विद सिमिलर मेथड्स बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तीसरा जो होता है वो रेगुलर मेस्कैल होता है, जो बेसिकली इतने रूटेड और इतने अर्दन मेथड से नहीं बनाते। दिस इज माद्रे मेस्कैल, द बॉटल दैट आई हैव इन माय हैंड। माद्रे मीन्स मदर इन स्पेनिश, सो देयर इज अ मदर ऑल्सो पेंटेड हियर। आज हम सीखेंगे कुछ नया। यस, आज हम सीखेंगे कुछ नया। देखो मेस्कैल को जानने के लिए मैं कितना दूर आ गया। करते हैं फिर, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। ये देखो अगावे जैसा प्लांट होता है, तो देखो टकीला बनती है ब्लू वेबर अगावे से। टकीला कैन ओनली बी मेड विद ब्लू वेबर अगावे और 250 से ज्यादा वैरायटी होती है अगावे की। तो करीब 50 से ज्यादा वैरायटी है जो मेस्कैल बनाने के लिए यूज हो सकती है, इंक्लूडिंग ब्लू वेबर अगावे। बट मोस्टली ब्लू वेबर अगावे यूज नहीं होता मेस्कैल बनाने के लिए, बिकॉज टकीला इंडस्ट्रीज को यूज कर लेती है। एक मेस्कैल दूसरे मेस्कैल से कैसे डिफर करती है, एक तो कौन सा अगावे यूज कर रही है। अगर मैं ये वाला अगावे देखूं, दिस इज कॉल्ड पिक्सटाटे और ये जो है दिस इज करुइंस्की। एज यू कैन सी दिस इज लॉन्गर एंड दिस इज मोर राउंड। आपने देखा होगा काफी मेस्कैल लिखा होता है एस्पादिन, तो एस्पादिन इज आल्सो काइंड ऑफ एन अगावे। डिफरेंट अगावे will give you different mezcal. That's one. Second, mezcal define होता है वो कौन से प्रोसेस से बन रहा है। जैसे कि बताया, जो ओल्ड ट्रेडिशनल वे है that is called ancestral और ancestral, और जो अब थोड़ा सा उसका मॉडर्न है वो है आर्टिजनल। और एक जो और मॉडर्न हो गया जो बहुत इंडस्ट्रियल स्केल बनता है और ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं यूज करते, उन पर सिर्फ मेस्कैल लिखा होगा। तो एंसेस्ट्रल, आर्टिजनल और जस्ट मेस्कैल। 9 से ज्यादा स्टेट में अगर वो बन रहा है इन 50 वैरायटी ऑफ अगावे से बन रहा है और कोई ये मेथड यूज कर रहा है, तो वो मेस्कैल है। सिंपल है, ये मेस्कैल डेफिनेशन ये है। आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मेस्कैल बन कैसे रहा है। ये इनफैक्ट अगर आप सेटअप देखोगे, थोड़ा सा अर्दन सा सेटअप है, थोड़ा सा इन इंडिया जैसे हम बोलेंगे शायद जहाँ ताड़ी बनती होगी, बिल्कुल काफी विलेज रूरल टाइप सेटअप है। मैं आपको एक स्टेप दिखाऊंगा, बट यस, द अगावे हैव कम एंड दिस इज समथिंग दैट विल बी कट एंड कुक्ड। मेरे पीछे ये वो पिट है जहाँ पे एक्चुअली अगावे कुक होगा। अगावे कुक होना क्यों जरूरी है? अगावे कुक होना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगावे में एक्चुअली लॉन्ग चेन शुगर्स होती है। तो लॉन्ग चेन शुगर को ब्रेक करना है टू स्मॉलर चेन शुगर्स जो कि एक्चुअली मीठी होंगी, तो उसके लिए उसको कुक करना पड़ेगा। बेसिकली स्टार्च को वेकअप करना है ताकि वो शुगर में कन्वर्ट हो। दिस इज द अर्दन पिट, एज यू कैन सी एट द बॉटम इज वेयर दे विल पुट वुड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वुड डालेंगे, वुड का बेस बनाएंगे। उस वुड के बेस के ऊपर हम ये जितने स्टोन्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर ऑल वोल्केनिक स्टोन्स, एज यू कैन सी ऑन द पेरिफेरी। ये सारे वोल्केनिक स्टोन्स हैं। ये वोल्केनिक स्टोन्स उसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे नीचे हमने एक वुड का बेस बनाया, उसको फायर किया, उसके ऊपर ये जो स्टोन्स हैं, ये जो वोल्केनिक स्टोन्स हैं, ये ड्रॉप करें। तो वोल्केनिक स्टोन्स एक्चुअली हीट होंगे, जो अभी आपको ब्लैक दिख रहे हैं, ये जब हीट होंगे एकदम व्हाइट हो जाएंगे। उसके ऊपर अगावे का बेस रखेंगे, उसके ऊपर अगावे रख देंगे बहुत सारा, और उसके बाद उसको कवर कर देंगे मिट्टी से। तो दे विल कवर इट विद मड। द लॉजिक ऑफ पुटिंग मड ऑन टॉप इज ताकि ऑक्सीजन ना जाए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन जाएगी तो वो फ्लेम्स होने लगेंगी। तो फ्लेम्स को रोकने के लिए रॉ हीट में अगावे कुक हो। ये जो आपको ऊपर सीलिंग दिख रही है ना, सो व्हेन यू स्टैक वुड, स्टोन, अगावे एंड देन मिट्टी, इट एक्चुअली रीचेस almost the top of that ceiling, and in that heat it will then cook for 5 days. Yes, so the way they're cooking it actually defines the smoky flavor. अब ये जो मेरे लेफ्ट में आप देख रहे हो, this is essentially cooked agave. If I have to pick one, so this is what a cooked agave looks like. It's brown. आपने देखा था वहाँ पे वो white था, but this is all brown and this is full of juice. If I actually tear it, this has a lot of, if you see this is what agave juice is. This is also what we get in the market as agave syrup. So this is the Tahona mill. As you can see, it's going to be pulled by a horse here, and this is the stone, the Tahona stone that you see, the round one. This is going to crush the agave and the juice will be collected. कुछ जगह पे जो थोड़े mass market scale है, वहाँ पे mill भी यूज होगी to crush the agave. ये एकदम ट्रेडिशनल वे है जहाँ पे एक horse pull करेगा Tahona stone को, crush करेगा agave को, and then juice is collected. So I think it's time for the horsey to start his job. Yes.
So this is the traditional way. As you can see, the horse pulls the Tahona stone, which then crushes the agave fiber. We're essentially moving the agave so that it is crushed. Every part of the agave is crushed here. So basically, they collect the juice in a wheelbarrow. So they fill a wheelbarrow and then वो juice आके इसमें dump करते हैं. So these are wooden fermentation tanks, which is also the traditional, ancestral or artisanal way of making mezcal. What's interesting about fermentation is कि इसमें yeast add नहीं कर रहे हैं. Naturally occurring wild yeast से ही ferment होगा. One big difference between mezcal distillation and tequila distillation is, of course, some tequila distillers also use this method. They are fermenting with fiber. I'll show you the tank inside. So नीचे agave juice है, which is diluted with water, and they put agave fiber on top. तो agave fiber में जो juice है, that will also add flavor to it, and उसके साथ ही ferment हो रहा है. So this fermentation tank has just been put today. It's very fresh. This will be roughly, I think, 4 to 5% ABV when it's done, and it will take anywhere from 6 to 9 days to actually ferment it completely. It's getting fermented with fiber, and I'll show you a fermentation tank now that has been done. So as you can see, this tank is where the fermentation is finished. On top is covered with agave fiber and fiber mud. Underneath this is alcohol, which is 4 to 5% ABV, and this needs to be now distilled. Basically, अब होगी ये purified. So in this, what they are doing is essentially filling the copper still. As you can see, this is made of copper. You can see on the side, they are filling the copper still with the 4 to 5% ABV that we received from fermentation with fiber. This is also a unique method that they put fiber in the still. It's underneath heated with wood. No tequila distillation actually happens with fiber. In mezcal, they use fiber as well. As you can see behind me is a copper distillation tank right here, which is is smoking up because it is heated with wood. This behind me, what you see here, is the first step, and then on a distance that you see, I'll show you. That's where the second distillation happens. After second distillation, the spirit that we'll get is about going to be 55 to 60% ABV. It's going to be very clear, very pure, all impurities, all gandgi removed. And this is then diluted to 40, 43, 44% ABV and then bottled. So this is how the second distillation step is getting heated. Actually, this distillation pot is made of clay, but in the artisanal way, the distillation pot, as you can see, is made of copper. Now this is the second distillation step. As you can see, basically इसके अंदर हमने वो first distillate डाला, and then it gets condensed and then it is collected over there. As you can see, this extra step, the onion shaped thing in the middle, that's actually extracting some copper taste to it because it is wood heated. So there's a lot of copper that goes in the spirit that has to be extracted. So that extra step, extra onion step that you're seeing is extracting excess copper from the spirit. And the same copper still that we just saw is being heated by wood. So this is, as traditional as can get. This is the copper still that we just filled up with fiber and the fermented spirit. This is another copper distillation pot that is heated with wood, as you can see. This is what it looks like from the bottom. What's happening in this process is the alcohol vapors are rising, they're condensing here, and they're collected here. As you can see, this is after the first distillation. This is what is coming out. This would be about 20 to 30% ABV after first distillation. So we just taken out the glass from the first distillation copper still. This would be anywhere from 20 to 30% ABV. As you can see, this is very clear, and but after second distillation, it will be pure. This would be about 20 to 30% ABV. Let's taste this. It's like a diluted spirit that we drink because it is a 20 to 30% ABV. It has that smoky flavor, but has that little off-putting flavors which have to be removed with second distillation step. It's clear, but I mean it can be clearer. Of course, the spirit that we drink are way clearer. Yeah, this is interesting. It has that smoky flavor, has that mezcal agave flavor. So अब second distillation हो गया है. Second distillation के बाद हमने उसका distillate collect कर लिया. एक बड़ा important step है to maintain the safety of the spirit is to remove methanol from it. अब methanol remove करने का बड़ा ही simple तरीका है. Removal of heads of the distillate. Heads क्या होते हैं? Basically जो पहले distillate आएगा कुछ देर के लिए, that will be rich in methanol. That is discarded. That is never incorporated in the spirit. Methanol is not great for you. You know that it's not good for health. Then the heavier alcohols like ethanol,
and other compounds. Then they start flowing in. So सबसे पहले head आया, फिर the heart of the spirit आया, और उसके बाद है tails. Tails क्या होते हैं? Tails are basically heavier compounds which have off-putting flavors, which are not tasty, which are not good, and that have to be removed as well. So what they do is basically they have a wooden bamboo straw. They suck in the alcohol and then they drop it in a cup. As the alcohol drops, उसमें air incorporate हो जाती है, and वो air कितनी देर तक उसके अंदर रहती है, उससे पता चलता है कि उसमें कितना ABV है. So when the second distillate is coming out, the first part is discarded, the second part is kept, and the third part is discarded. And the heart of the spirit that you get is what comes at about 55% ABV. Now that has to be diluted and brought down to 45% ABV. So Madre Mezcal जो bottle करता है, they bottle at 45% ABV. Now let's head to the best part of this video. What? Tasting of different expressions of Madre Mezcal. आज हम ट्राई करने वाले हैं 4 एक्सप्रेशन Madre Mezcal के. Actually 3 Mezcal हैं और 1 tequila है. The first one that we'll try is the Espadin, which is essentially one agave, the Espadin variety of agave. It is at 43% ABV. It mentions Mezcal artisanal, as you can see. It says Mezcal artisanal, which is made in an artisanal way, which is in the middle way. So it is not ancestral and it is not the modern way. So artisanal way, which we saw, जहाँ पे जो distillation pot होंगे वो कॉपर के बने होंगे. Let's try this one. So on the nose you can smell the smoke, and it has little a different agave to it, because I've been drinking tequilas, but it smells different. So it has that smoky agave flavor. What's interesting is that it has a fruity and floral notes to it, and that is evident, but primarily because ये wild yeast use करते हैं, तो yeast add नहीं करते. So जो naturally occurring हवा में जो yeast है उसको use करते हैं, and whenever there is a wild yeast, there always be fruity and floral compounds to it, primarily because the yeast actually feeds on a lot of the plants around, the fruits, the flowers. So basically mezcal that is made of wild yeast will have fruity and floral taste to it. One thing that I learned is that distilleries in mezcal are called palenques. तो इस पलंके को अगर मैं उठा के कहीं और ले जाऊंगा तो वहाँ के फ्लोरा पे डिपेंड करेगा उसमें जो फ्रूटी फ्लेवर्स. सो द सेकंड वन वी आर ट्राइंग इज एन ensemble. Ensemble क्या है? बेसिकली एक ब्लेंड है डिफरेंट अगावे स्पिरिट्स का. यस, इट्स अ ब्लेंड. सो पहला वाला जो हमने ट्राई किया था वो था एस्पादिन, दूसरा वाला है ensemble. इट्स मेंशन्स दैट इट इज एस्पादिन एंड कीश. So इसमें about 80% एस्पादिन है, 20% कीश है, एंड इट सेज artisanal. That means in the middle way, so the distillation pots are not clay, they are made of copper. Let's taste this. Oh, this actually smells a little different than the first one. The edge of the espadin is rounded by the smoothness of the quiche, and you don't feel the burn. It's 45% ABV. A big part of a burn is essentially one off-putting flavor that edges, and they've kind of rounded off blending two agave spirits. It is very, very smart. Of course, it takes a lot of effort to know what flavors will round off what flavors. So this is Espadin and Quiche. Now this is going to be special. This is the third one that we are trying. This is an ensemble, which is again a blend. So it mentions Espadin and Toba Chiche. Basically इसमें 80% Espadin है, 20% Toba Chiche है. And this is why it's special, because it's an ancestral. Ancestral is basically the traditional way of making it. So basically earthen pot होगा, and जो distillation pot है, that is not made of copper. That is made of clay. Yes, clay. Let's see how that clay pot is adding to it. Or there's a different nose to it. You can smell little earthen. This has an earthen nose to it. So जैसे वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुल्लड़ basically in a way. So it has the floral notes. Definitely has that agave flavor, and on the back there's also earthen flavor to it. जो हम कुल्लड़ में चाय पीते हैं, ये बिल्कुल वो कुल्लड़ वाली mezcal है, आप समझ लो बस. This is my first ancestral mezcal that I ever had. And the fourth one we're trying is the tequila, which of course they don't make it here because Oaxaca is not part of the Jalisco region. In fact, their label also says here Jalisco. They make it in the Jalisco region, but I'm in Oaxaca, so I'm gonna try their tequila as well. Let's taste this. So I asked them how they're making it. देखो traditional way जो होता है cooking of agave का has to be in a stone brick oven. So they use stone brick oven जहाँ पे वो steam होगा. So that is the traditional way of making. And then they use a mechanical shredder to shred it into fibers. And then they use open fermentation tank. The stainless steel open fermentation tank, as they do in their mezcal. They also use naturally occurring wild yeast. जो हवा में basically yeast है. Taste करते हैं. Has that nice nose to it. It's actually very different. Agave है, but agave के साथ साथ कुछ floral notes भी आ रहे हैं, fruity notes आ रहे हैं. Let's taste this. Oh,
Oh, it's very nice. Like a peppery finish to it, but in the middle you get that floral and fruity notes to it, which is evident. Interestingly, this is still strength. So मतलब 48% ABV है second distillation के बाद जो आया है. No water has been added, but because the agave flavor is being rounded by the fruity notes, it's still very tasty. I love it. It's good. आज का एपिसोड बहुत ही खास था क्योंकि आज मैंने वो आर्टिजनल वे ऑफ मेकिंग मेस्कैल देखा. यस, बहुत ही अर्दन सेटअप है. और मैंने एक चीज रियलाइज करी कि सो दिस पलंके, सो यहाँ पे जो डिस्प्लेज होते हैं उनको पलंके बोलते हैं. एंड दिस पलंकेज are owned by people who live here. Jose, जिनसे मैं मिला आज, Jose owns this palanque. I met Jose's brother also, and these two brothers, I met their dad also. Their dad actually started this palanque, and now two sons run two different palanques. One is here and the other one is there. So two palanques operate in this small area. Brands can come and work with them and build their brands, bring their recipe, and they basically do it for them. It's like contract manufacturing जैसे इंडिया में होती है, यहाँ पे contract distilling होती है, and they build their brand in a palanque. यार इसका मतलब मैं यहाँ पे आके अपना भी ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ, है ना? तो कमेंट करके बताओ यार, मेंडी किस चीज की वेट करते रहते हो, सोचते ज्यादा हो. ऐसे कमेंट लिखो, मेंडी यार तुम सोचते ज्यादा हो, कमेंट में लिखो ताकि पता चले कि यार चलो अपना ब्रांड भी मेस्कैल का बनाना चाहिए. और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, सिर्फ वही जो पीते रहते हो वही मत पियो, कुछ बड़े हो जाओ. डोंट ड्रिंक टू गेट भंड, ड्रिंक टू एंजॉय, हैव एन एक्सपीरियंस. इसलिए थोड़ा बहुत मिक्स इट अप करते रहो.